Hello students. So we will do the first MCQ questions. तो देखते हैं questions क्या है. The first question is the coordination number of metal crystallizing in a HCP structure is. ठीक है, इसका भले आंसर मैं बता देता हूँ. It is 12. But remember for HCP and CCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कोई भी पार्टिकल का, कोई भी एटम का, दैट इज ऑलवेज 12. 12 कैसे? 6 ऑन द सेम प्लेन, 6 ऑन द, अच्छा ठीक है, 6 ऑन द सेम प्लेन, 3 अबोव 3 बिलो, 3 अबोव एंड 3 बिलो. इसको याद रखना. ठीक है, आई जस्ट शो यू द पिक्चर. तो द करेक्ट आंसर इज 12. आई जस्ट ट्राई टू शो यू द करेक्ट आंसर. देखो, so let me make a hexagonal close packing structure. Okay, roughly I'm making it. Okay, so let me just take another color. This is at the back, this is at the back. So यहाँ पे जो particles होंगे, what are the particles that will be there? The particles will be on the corners. Corner particles. This is the corner particles. Corner particles. ठीक है? Corner particles. There is a face center particles. This is I'm drawing specifically for HCP. ठीक है ना? तो this is the corner particles. Corner particles का contribution किसी को पता है? It is 1/6. Okay. So this is the corner particles. Done. Yes, this is the face center particles. तो ये layer A है, जो पिंक से ड्रॉ किया वो मैंने layer A बनाया. ठीक है. And the next layer that will come over is suppose layer B. Layer B में जो 3 particles होते हैं वो अंदर रहते हैं बॉडी के बीचों बीच. Okay. So this 3 particles which is drawn in green, this is layer B. It is in between the bodies. Okay. तो फिर लेट मी कंसिडर, मैं किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सटेंड दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बिकॉज ये एक यूनिट सेल है जिसको अगर हम लोग हर एक डायमेंशन में रिपीट करते रहे, वी गेट द एंटायर क्रिस्टल. वी गेट द एंटायर क्रिस्टल. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. वी गेट द एंटायर क्रिस्टल. Okay, so this is at the back. This is at the back. So in this case there will be more particles. Then the layer B will come over again. तो यहाँ पे जो layer B होंगे, right? 3 particles. Now check for this one that I am speaking about. ये this particle. ठीक है, ये जो particle है, it is being surrounded by 6 particle on the same plane. 6 particle on the same plane. These are the 6 particle. Okay, so 6 particle on the same plane. तो कौन सा particle है? I'll just write it over. That will be better, I think. It is number 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये मैंने जो स्माइली बनाया हुआ है, to that there is 6 particle which is on the same plane. 3 is on the top. कौन सा 3? This is 6, 7, 8, 9. This 3 is on the top and 3 on the bottom. 10, 11, 12. So there is, ये अगर particle को select कर लिया जाए, there is total 12 particles which is surrounding it. Okay. In a FCC, just for now you remember, it is also coordination number जो होता है वहाँ पे भी 12 होता है. Okay. So the correct answer is 12. Let us move on to the next question. Let us move ahead. A compound is formed by element A and P. This crystallizes in the cubic. This crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the body center. The simplest formula. So effective number of A कहाँ पे है? It is in the corners. So corners में कितने particle होंगे? Because it's a cube. Cube में 8 particles होते हैं corners में and contribution is 1/8. So it is simply going to be 1. And B particle is at the body center. तो body center में कितना particles हो सकता है maximum? एक ही particle हो सकता है, right?
So it is 1 into 1, that is 1. So therefore formula of the compound लिखने से पहले you must also, this is the way you should, it is easily guess, मतलब तुम लोग guess कर सकते हो, it is easily guessable that the formula of the compound will be AB. But let us come to that conclusion. ZA is to ZB का ratio क्या हो जाएगा? It will be 1:1. So simply you can put A1 B1. So this is the formula of the compound. AB is the correct answer. Let us move on to the next question. A metal crystal having BCC type stacking pattern. BCC क्या होता है? BCC होता है, whatever. It is body centered cubic unit cell. What percentage of volume of this lattice is empty space? Okay, this is easy. Packing efficiency कितना होता है? Packing efficiency for BCC कितना होता है? It is 68%. तो void परसेंटेज कितना हो जाएगा? void परसेंटेज हो जाएगा तुम्हारा 32%. दिस फॉर BCC. ठीक है, तो ये होता है 68%. ओ सॉरी, दिस इज, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द लैटिस एम्प्टी स्पेस. सिंस दे हैव आस्क्ड अबाउट द एम्प्टी स्पेस, द करेक्ट आंसर विल बी 32%. करेक्ट. सो गिविंग यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज दैट ये BCC के लिए तो 68 हो गया, तो FCC के लिए कितना होगा? FCC के लिए दिस वैल्यू विल चेंज टू 74% एंड void will be 26%, जो कि ऑप्शन में है. ओके, एनीवेज दे हैव आस्क्ड ओनली अबाउट द BCC, नॉट FCC. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So these are pretty easy question, will not require much more than 1 minute. So a solid compound contains X, Y and Z atoms in a cubic lattice with X atoms occupying कौन सा? Corners, Y atoms body center, Z atoms at the faces of the unit cell. Okay, so where is ZX कौन सा occupy करता है? It is occupying the corners. Okay, you must remember it is occupying the corners. So there is 8 corners, 8 into 1/8. So next is ZY. What is Y? How many atoms are there at Y? It is Y is at the body center, so 1 into 1, that is equal to 1. And what is about Z particle? That is Z particle at the centers of the faces. So there is 6 centers, so six face centers. तो फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, राइट? सो अल्टीमेटली इट इज़ 1, इट इज़ 1, इट इज़ 3. सो ZX is to ZY is to Z. Okay, by the way, what is this Z? इतना समय बोल रहा था. It is the effective number of particles. Effective number of particles per unit cell. Effective number of particles per unit cell. Per unit cell. So don't be confused. Okay. So ZX, ZY, ZZ. So it is 1:1:3. So therefore X1, Y1, Z3 is the correct answer. Let us move on to the last question. What is the last question? Let us go ahead and see. Relationship between, this is an easy question, fairly easy question, atomic radius and edge length of BCC. So we know that for BCC, 4R is equal to root over 3A. What is root over 3A? Root over 3 is the size of what? Body diagonal. It is the size of body diagonal. ठीक है, तो it will be what? R is equal to root over 3/4A. So this is the for BCC. Okay, so this is the correct answer, option C. So let us go for learning this same thing for FCC also. FCC के लिए क्या होगा? What is the FCC? 4R is equal to root over twice A. What is root over twice A here? It is face diagonal. Face diagonal. ठीक है, तो उस समय क्या होता? R equal to root over 2/4A. So 1/2 root 2A. Okay, तो ये हो जाता. So okay, just check it. 1/2 root 2A. This is for FCC. For simple cube क्या होता? For simple cube, what would have been the answer? R is equal to क्या हो जाता है? A/2. ठीक है, simple. So our correct answer for this question is root over 3/4A. So all right, let us move on to the numericals. Okay students, so the question is, find the number of unit cells in a 4 gram of an unknown element X which crystallizes in
BCC पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। पहले बता देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज गिवन बाय वेट ऑफ द सैंपल। जो वेट दिया गया है सैंपल का, यहाँ पे जैसे 4 ग्राम ऑफ एन अननोन एलिमेंट दे दिया, वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय Z इनटू मोलर मास ऑफ द सैंपल, ठीक है। So weight of the sample divided by molar mass, sometimes you might write as number of moles also. Number of moles divided by Z, that is also correct. So number of unit cells is equal to n number of moles divided by Z. Okay. So whatever is given in this question, we will start with that aspect. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, they have just given what is the weight of the sample they have given. Weight of the sample is W, let us take it W, divided by Z into molar mass of the particle, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये वेट कितना दिया गया है, 4 ग्राम, ठीक है। पैटर्न कौन सा है, Z कैसे पता चलेगा, BCC पैटर्न है। BCC के लिए क्या होता है, 2। BCC के लिए Z का वैल्यू जो होता है 2 होता है। व्हाट इज Z? Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ओके, per unit cell. Is it okay? I hope so, it's okay. So Z क्या हो जाएगा, Z will be 2 into what is the value of the atomic mass, it is 40. So simply it is going to be our 1 by 20. So it is going to be 0.05 in terms of what, in terms of moles, okay, 0.05 moles of number of unit cells. So you can write this as the answer, that number of unit cells equal to 0.05 mole. Hope so it is okay. Next, a metal has, देखो solid state में ज़्यादातर questions इसी टाइप के रहते हैं, okay. So let us go to the question. A metal has a FCC lattice, ठीक है। metal has what, an FCC lattice, okay. तो FCC लिखने के साथ साथ Z equal to 4 आ जाता है FCC के लिए, correct. So always remember this. Edge length of the unit cell is how much? Edge length of the unit cell is 404 picometer. That is equal to 404 into 10 to the power minus 10 centimeter. Correct. Density कितना दिया गया है, 2.72 gram per centimeter cube. It is given like that. The molar mass of the metal is, molar mass of the metal की मान एटो होती है, okay. So they have asked you what is the molar mass. Avogadro number they have given the value. So simply they have asked you the edge length of the unit cell, okay. Edge length is also mentioned. They have asked to find the, actually question is find the molar mass of the metal. So to find the molar mass of the metal, so you will simply apply the formula D is equal to Z into M, A cube into Avogadro's number. So molar mass जो हो जाता है, that is equal to, molar mass equal to D into A cube into Avogadro number divided by Z, okay. So what is the value of D? It is 2.72. What is the value of A cube? It is 404 into 10 to the power minus 10 cube into Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23 divided by what is the value of Z? It is 4. So the correct answer is, so the molar mass of the metal is 27 ग्राम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट विल बी ग्राम पर मोल. जो मोलर मास होता है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसलिए 27 ग्राम पर मोल. फ्रॉम दिस यू कैन मेक अप विच एलिमेंट इज दिस. अगर क्वेश्चन को फर्दर बढ़ाया जाता है, दैट विच एलिमेंट इज दिस, यू कैन सिंपली से इट इज एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम हैज अ मास ऑफ 27 ग्राम पर मोल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल, मोलर मास दिया हुआ है, has an edge length of 362 picometer. Its density is 8.92. Find the type of the unit cell. So you need to find the type of the unit cell. Okay. So so sorry. So you need to find the type of the unit cell. So what will be the type of the unit cell? So let us go ahead. Molar mass दिया गया है कितना, 63.55. Okay.
then has a edge length of how much? 362 picometer, which is nothing but 362 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर. ऑल राइट, डेंसिटी कितना दिया गया है? 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल. सो दे हैव आस्क्ड यू जेड. जेड अगर निकल जाए देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टाइप ऑफ द यूनिट सेल. अप्लाई द फॉर्मूला D is equal to Z into molar mass A cube into Avogadro number. This is the simple formula that we need to always follow in the maximum questions of density based question of solid state. तो निकालना तो Z है, तो Z निकालेंगे हम लोग. कैसे निकालेंगे? इट विल बिकम D इंटू ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई Z divided by molar mass. So what is molar mass? What is density? Density is simply your 8.92 into a cube का वैल्यू कितना हो जाएगा? It will be 362 into 10 to the power minus 10 whole cube into Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23 divided by the molar mass 63.55. So the correct answer is, so if you do the calculation it will come to be 4. So if it is 4, definitely you know Z equal to 4 किसके लिए होता है? It is for F. Dissolving, this is a question from solutions. So we will not apply any shortcut while doing this so that you can do well in your boards with this. I'll also recommend you that you also try some shortcuts. There are some shortcut formula that I have already provided you. So you go ahead and try to solve the same question using those formula. So dissolving 120 gram of urea, what is the weight of urea given? Now I said one thing very clearly. A का मतलब क्या होता है? Solvent. And B का मतलब क्या होता है? Solute. What is the solute over here? It is urea. ठीक है. तो weight of urea is given how much? It is 120 gram. Molar mass of urea is also mentioned, 60 gram per mole. Is it okay? Then what is the weight of the solvent? Weight of the solvent is 1000 ग्राम. ठीक है. डेंसिटी कितना मेंशनड है? 1.15 ग्राम पर ml. फाइंड मोलैरिटी. मोलैरिटी को क्या देंगे हम लोग? मोलैरिटी वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इज इक्वल टू, दे आस्क्ड यू द फाइंड द मोलैरिटी ना. ऑल राइट, आई विल जस्ट चेक वन थिंग. सो देखो क्वेश्चन में जो मेंशनड है दैट इज मोलैरिटी. हाँ, दे हैव गिवन टू फाइंड मोलैरिटी. मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, इफ इट इज इन ml, if it is in ml then you must multiply 1000 over here. Okay, correct. So density, volume का see you can find volume easily. ठीक है. Weight of the solution, what is the weight of the solution? Weight of the solution is represented by W is equal to weight of the solvent plus weight of the solute. What is the weight of the solvent? It is 1000 gram plus what? Solute कितना है? 120 gram. So it is 1120 gram. This is the weight of the solute. Correct. तो volume हम लोग को निकालना है. How can we find volume? Density is equal to weight by volume. Weight is already there. Volume will get by what? Volume कैसे मिलेगा? Weight by density. Correct. तो instead of volume I'll put weight by density. So instead of volume I'll just put weight by density. So it is number of moles of the solute into 1000. वॉल्यूम की जगह मैं क्या देखूंगा? वेट बाई डेंसिटी. वेट बाई डेंसिटी करने से डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, राइट? वेट बाई डेंसिटी डन. सो नाउ एवरीथिंग इज देयर आई होप एंड वी कैन डू द कैलकुलेशन. सो नंबर ऑफ मोल्स एन बी क्या हो जाएगा? एन बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्यूशन. डब्ल्यू, दिस डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन. ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ये रहा, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया है, इनटू 1000 इनटू डेंसिटी. So what is the answer that is going to be? Weight of the solute is how much? 120 into 1000 into 1.15 divided by molar mass of the solute. Molar mass of the solute. What is the molar mass of the solute? It is 60 gram per mole into
into what? Into weight of the solution. What is the weight of the solution? 1120 by okay. So it is coming out to be 2.05 because it is molarity. I have to write mole per liter. Okay, so it is 2.05 mole per liter. So this is the simple and small calculation. Next question, which is also the last question. Density of a 2.05 molar solution of acetic acid. What is the formula of acetic acid? CH3COH. इसका मोलर मास कितना होता है? एसिटिक एसिड का मोलर मास B माने B मीन्स इसको हम लोग सॉल्यूट पकड़ लेते हैं, दैट इट विल बी MB. सो ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल. तो व्हाट इज़ द डेंसिटी गिवन? डेंसिटी इज़ 1.2 ग्राम पर ml. मोलैलिटी निकालना है. ओके, विल फाइंड इट, नो इश्यूज़. सो मोलैलिटी निकालना है. मोलैलिटी, okay, from the definition of molarity, it means that 2.05 moles of acetic acid is present in one 1 liter of solution. So from where we have written this? This is the definition of molarity. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. So 2.05 molar अगर लिखा हुआ है उसका मीनिंग यही निकलता है. So number of moles of the solute is how much? 2.05 moles. What is the volume of the solution? Volume of the solution is 1 liter. Okay, all right. So molarity is all right. Number of moles is all right. नाउ हम लोग को क्या चाहिए? मोलैलिटी निकालना है. मोलैलिटी क्या हो जाएगा? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट. वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम. अगर इसको ग्राम में लिख देते हैं इंटू 1000 हो जाएगा, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by what is the weight of the solvent, can be written as weight of the solution minus weight of the solute. You should know this. Weight of solution is equal to weight of weight of solvent plus weight of solute. तो weight of solvent अगर निकालना हो, weight of solution minus weight of solute हो जाता है. What is weight of solution? It is density into volume of solution minus what is the weight of solute? Weight of solute कितना हो जाएगा? Weight of solute will be number of moles of the solute into molar mass of the solute. So what is the number of moles of solute? Already everything is mentioned. So I'll just put this equation. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? I'll just put the equation. Number of moles of solute के जगह we can find it out, right? Weight of the solvent, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. डायरेक्टली we can plug in. So density into volume कितना हो जाएगा? Density into volume, what is that? 1.2 into, I will do the calculation only in the last step. Okay, what is the volume? Volume is 1 liter, so it is 1000 ml because we have taken in gram. Okay, that's all right. We can take in 1000 ml minus number of moles is 2.05 into what is the molar mass of the solute? Molar mass of the solute is 60. Okay, so number of the solute कितना हो जाएगा? Okay, I'll just plug in the values. So it will be number of moles is 2.05 into 1000 and divided by weight of solvent. What is the weight of solvent? It is 1.2 into 1000 minus 2.05 into 60. So what is the correct answer? So the correct answer is 1.9 mole per kg. Okay. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. यहाँ पे इस DPP को तुम लोग वापस प्रैक्टिस करो, DPP 3 ट्राई करो एंड कीप ऑन सीइंग दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.